all speakers and participants. So we'll be formally beginning the webinar. Just for setting the context, I would like to give a brief intro about the topic which we are going to discuss today. So globally, the waste sector is increasingly recognized as a growing contributor to greenhouse gases emissions, particularly methane. So methane is a short-lived climate pollutant with significantly higher warming potential in the near term, making it a priority area for immediate climate action. And we have seen that across many developing and emerging economies, rapid urbanization, rising consumption patterns, and inadequate waste infrastructure have all contributed to increasing emissions from landfills, wastewater systems, and open burning practices. So, as countries are updating and strengthening their nationally determined contributions under the Paris Agreement, there is increasing global attention on methane mitigation, including from the waste sector, as one of the most cost effective and scalable climate solutions. If we talk about a specific case of Pakistan, in Pakistan's BTR report of 2024, we have seen that there are indicators that waste sector emissions in 2024 stood at 32.44 million metric tons of carbon dioxide equivalent, which accounts for almost 6.22% of total national emissions. So within this total, we have seen that solid waste disposal contributed almost 17.52 million metric carbon dioxide equivalent, and this was basically largely from unmanaged landfills. Then we saw that wastewater treatment contributed 14.61 million metric carbon dioxide equivalent. And lastly, we found out that open burning and incineration contributed 0.31 million metric carbon dioxide equivalent. So while energy and agriculture dominate overall emissions, methane basically consists like 33.3% of Pakistan's total greenhouse gases profile. And this basically underscores the importance of addressing methane intensive sectors such as waste. Moving forward, I would like to explain the purpose of today's consultation. That against this backdrop, today's consultation aims to explore how practice-based bottom-up waste interventions can inform national climate processes, particularly in the context of strengthening sectoral integration within NDC frameworks. So the objective is not merely to identify the challenges here, but to move forward toward a structured evidence-based policy input material that align local implementation realities with national climate commitments as well. So key objectives of today's webinar, if I sum them up, is to examine the role of the waste sector in national methane emissions, to identify structural and operational challenges in reducing waste-related emissions, to explore realistic and scalable mitigation pathways, to gather practitioner-driven inputs for policy integration, and finally, to initiate a structured dialogue towards improved NDC alignment. Before I move forward, I would like to mention a few housekeeping rules here for this webinar. This session is being live streamed on Facebook as well as YouTube. So kindly keep your microphones muted when you are not speaking. For the audience, if you have to ask any question, Zoom chat box is there. You can type your question and our speakers will definitely be answering them. We also request speakers to stay within their allocated time between 8 to 10 minutes each. And finally, this session is also being recorded for documentation purposes. I now invite Ms. Zainab Naeem, Associate Research Fellow, Ecological Sustainability and Circular Economy Unit, STPI, to deliver the welcome remarks and formally open today's consultation. The floor is yours. Thank you very much, Amna, and I welcome all of you, especially our speakers who have joined us for this this important webinar. So I would like to welcome Mr. Arif Kohir, Executive Director, JCISD Global Change Impact Studies Center, who has played an instrumental role
rather the key role in context of framing and setting up the NDCs for Pakistan. Dr. Aisha, who is the CEO of Akhtar Hamid Khan Foundation, the organization that is very much directly involved in context of the waste sector and informal workers. Ms. Rabia Razak from International Labour Organization, who has been working around the social aspects that are connected with the overall informal waste workers and the compliance, etc. Miss Angel Imdad from Irvard, she is running a successful SME, and she's directly working again with the informal sector and also around the circular economy model of waste sector. We have also invited representative of informal sector, Mr. Hafiz from Sahibal, who will be mentioning the challenges that he faces in context of waste sector, and also in context of how the social challenges that sometimes we can relate in theory, but not in in context of understanding the actual challenges that these people face when they are in ground. And last but not the least, I hope I'm not yes, Mr. Shibu from Gaia, who is the representative of the organization that is working regionally in context of raising the voice of the informal people, and also in context of promoting those practices that are climate friendly in the waste sector, and also the circular economy practices, the raising the opportunities, raising the voice of informal sector, and also exploring opportunities for the MSMEs that are actually involved in this area. So with this, just briefly setting up the tone of this webinar, as Amna has very much explained earlier. The purpose is not exactly, to write down something new in context of NDCs or in context of anything else. The purpose is to provide a policy input. Every country in the world struggles when it comes to NDC, especially the developing countries. It's not easy to collect data, because especially within the South Asia region, because 90% of the informal sector is involved in waste sector. Informal means they're not formally registered, so that creates a challenge when it comes to recording the data. Apart from that, open burning, open dumping is also a challenge that countries face in this region. We do not have proper landfill sites. We do not have waste at source segregation. That is one of the key challenges. And I think despite these challenges and other challenges, that there is a lack of priority being given to this sector in context of climate change, not just within South Asia, but even globally. Just at COP30, I think this was first time documented that circular economy solutions within the waste sectors needs to be addressed, needs to be taken up in order to address the climate change crisis, rather climate breakdown that is happening, because this sector is also directly contributing towards the climate change, the crisis that we are facing. Apart from that, within the United Nations Environment Program, the INC 5 or 5.2 and now 5.3 has been happening to discuss a legally binding document around the plastics, banning the single-use plastic and overall plastic pollution, which is again one of the greatest challenges of our time. Why? Because we simply cannot get rid of plastics. But if we cannot get rid of plastics, we need to come up with ways to reduce the plastics pollution, which is exactly a key challenge for the world. But I think one of another important challenge that remains unaddressed is the organic waste, the food waste, the other kind of waste, because as people, as an individual, uh, probably we are not, although we understand this is a moral obligation not to generate waste, whether we talk about any culture in the South Asia region, any religion, or any other aspect, people do understand waste is not good, so we need to reduce our wastage. However, because it is in our subconscious mind, but when it comes to addressing this challenge, we do not really prioritize the efforts, the solutions that are actually there. We think of solutions that are imported, that are exotic, that comes from developed world, not about the solutions that are actually being practiced by the informal sector.
And then now, just because we have also representatives who are Urdu speakers here, native informal sector, so I would like to change the language now also, and I would also encourage speakers if they are able to speak in Urdu, it's totally fine because we want our message to be advocated for all stakeholders. हमारे साथ आज जो हाफिज शफी साहब भी मौजूद हैं, हम उनसे भी कहेंगे कि वो अपना पर्सपेक्टिव शेयर करें, जो उनके मामलात हैं, चैलेंज हैं, वो किस तरह से हम मदद करते हैं कूड़ा उठाने में, उसको अलग करने में, और किस तरह से पूरी इंडस्ट्री जो है ये चलती है इनफॉर्मल सेक्टर की। तो मैं चाहूंगी कि जब आरिफ गोही साहब एक एनडीसीज का कॉन्टेक्स्ट सेट करें, तो हम उसके बाद आप लोगों की राय लें और उनको भी सुने, ताकि हम जो है वो ग्राउंड रियलिटीज को एड्रेस कर सकें, चाहे वो हमारी एनडीसीज है या कोई भी अपकमिंग पॉलिसी है। With this, I would like to hand over to you, Amna. Thank you so much. And I look forward to a productive discussion today. Thank you so much, Ms. Zainab, for such an elaborative context setting. To further provide the broader national climate perspective, I would now invite Mr. Muhammad Arif Kohir, Executive Director, GCISC. Sir, we would request you to share your insights on how waste sector emissions are currently positioned within Pakistan's climate reporting and how future NDC iterations may strengthen local integration. Sir, the floor is yours. Thank you. Thank you very much, Amna. Distinguished colleagues, esteemed experts, ladies and gentlemen, good afternoon. It is a pleasure to join this important discussion on waste sector emissions and bottom-up policy inputs for NDC in Pakistan, organized by STPI and the partners. This issue of waste sector sits at the intersection of, I will say, climate science, urban governance, as well as the sustainable development. As Amna also highlighted, that this waste sector represents one of the most under-recognized yet high impact opportunities for climate mitigation in Pakistan. The waste sector is mainly contributor to the methane emissions, which is having a 20 times higher global warming potential than the carbon dioxide. And this whole sector is unmanaged and unregulated. If we look at the reporting framework of the UNFCCC, United Nations Framework on Climate Change, Pakistan's greenhouse gas inventory identifies the waste sector as a growing source of methane emissions. As per the greenhouse gas inventory of 2024, based on which we have developed our NDC 3, it says that the waste sector contributes around 8% of the total national greenhouse gas emissions. If we look at the temporal inventories, which we usually produce after every 3 years, the rate of change is growing. And that is due to the intensive consumptive patterns of the masses in the country. The rate of increase of these waste sector is comparatively higher as compared with other sectors like energy, IPU and AFLU sectors. So that's why this sector has become an alarming as well as holds value for the strategic perspective. So as per again the inventory, Pakistan generates approximately 45 million tons of municipal solid waste annually, increasing at the rate of 7 to 8% per year due to urbanization and changing consumption patterns. So per capita waste, usually while preparing the inventory, we use as 0.65 kg per capita per day. But if we look at the metropolitan cities and the big cities like Karachi and Lahore, the
per capita waste has increased to 1 and 1.25 kg per capita per day. So this is quite challenging. The core challenge lies in the management practices. Um, Over 70 to 80% of collected waste is openly dumped, and wastewater treatment coverage remains only 10% nationally. These conditions allow unmanaged anaerobic decomposition, leading to significant methane and nitrous oxide emissions. But importantly, uh, 50 to 60% of our municipal waste stream is organic. This presents a substantial mitigation opportunity for us. And this can be done through effective ways of compositing, anaerobic digestion, and improved landfill management. On the other side, the waste sector offers comparatively low cost and technically feasible mitigation options as well. These options can be the landfill gas capture and flaring or energy recovery, development of sanitary landfills, that could be another option. Then compositing of the organic waste, anaerobic digestion for biogas production, methane recovery from wastewater systems. So, given the Pakistan's waste composition, diversion, and recovery strategies alone could reduce landfill methane estimates around 30%. It is a rough estimates, and these are particularly opportunities for the urban centers where we have large bulk of this waste sector. Beyond the climate benefits, these interventions also generate co-benefits like improved public health, reduced air pollution, job creation uh, through recycling and compost markets, as well as the renewable energy transition. There are some certain, these are benefits. And if we look at the technical potential, uh, this technical potential can be explored if we have the proper and robust data systems, which usually we don't have at the national level, at the province level, or at the uh, municipal level. So, for most of the cases, when we prepare the greenhouse gas inventories, we use the default emission factors, not the country specific emission factors. And default emission factors too on the base of the bulk approach. I mean, the access of population to the waste disposal systems like that. So this is a challenge, and this is only due to absence of the credible and robust data. What essentially should have been is that the time series data on the waste is there. It is properly gathered and it is properly conveyed through a certain set mechanism, and based on that we can prepare the greenhouse gas inventory using the life cycle approach. But this system somehow is missing in Pakistan, and that is a major challenge. GCISE have been being involved in the GHG inventory preparation for more than a decade. This is a quite challenging sector for us. We have last year we have also tried to organize a roundtable on that, how the data limitations of the waste sector can be uh, handled. And again, when last year we were preparing the NDC 3 document, again there was a waste working group under the mitigation committee of the NDC. Again, the discussion was that how that system can be made in a way that the consistent flow of the data is there. So for that, we need to strengthen the database system. We have the credibility and accuracy of the data.
we need to have well linked and well established data management systems. It is the primary thing based on which every effort which we want to do in terms of developing a proposal, developing a greenhouse gas inventory or like that, these are the crucial or fundamental step. And for all that, you can take help of any sort of methodologies like surveys, modeling tools, GIS mapping tools, then monitoring of the landfill sites. So these are the common practices which usually the countries follow in terms of the inventory development perspective. Now I come to the NDC. Pakistan's updated NDC, where it commits that we will be reducing 50% of its 2035 projected emissions by 2035, out of which 17% will be unconditional and 33% will be conditional. It also sets a target of 17% emission reduction from the waste sector, and also identifies the ways through which these emissions can be reduced. The quoted ways in the NDCs are integrated solid waste management, then compositing of the organic waste, semi-aerobic landfilling and wastewater management solutions, including segregation, recycling, compositing, landfill gas capture, or upgraded treatment facilities, or even the deployment of the advanced state-of-the-art methane capture and utilization system. So through these interventions, we can reduce the methane emissions. But again, the implementation of NDC requires coordinated governance. Waste management is primarily a municipal and provincial responsibility, while the climate commitments are national. Bridging this gap is very much essential. And if we look at since the NDC is there and we are now in the phase of the NDC implementation and plan and development, for effective NDC implementation, the local governments need to be systematically integrated into the national implementation framework. Simultaneously, the provincial environmental regulations can incorporate explicit methane reduction targets to ensure alignment with the national climate commitments like NDCs. Then measurement, reporting, and verification is another key component. In Pakistan, we are not very much, you can say, into that MRV systems. The data needs to be taken and it needs to be well embedded into the MRV systems for consistent monitoring. Then the third segment which I want to invite your attention to is it can be structured through the access to climate finance opportunities, including the carbon market mechanisms aligned with evolving Article 6 mechanisms. But for all these, the key point is we must also be having the full-fledged system of how, starting from the data, developing the proposal, linking it with the MRV system, and then preparing a case for the climate finance. So these all four things can be interlinked and integrated. Not can be, rather it should be. The key point in whole this discussion is, since in the very inception I said that this is the sector which is unregulated, the role of the informal sector is very much there. We must acknowledge that role, which this informal sector roughly estimates 7 to 10% of the recyclable materials before disposal. So climate smart waste policy must therefore be technically robust, socially inclusive, involving all the sectors, formal, informal, under the government patronage. So for all this, Pakistan is committed in prioritizing and developing the national roadmap for waste methane reduction,
in standardizing the emission assessment frameworks across major cities. We have recently completed a study in the KPK province where we have tried to develop a tier 2 inventory for the waste sector, because government believes that if strategically or designed and effectively implemented, the waste sector can evolve from being perceived merely as a sanitation concern to becoming a central pillar of Pakistan's climate mitigation strategies. So, waste sector, I will say that emissions are not merely an environmental liability. They represent a technically feasible and economically rational mitigation frontier. Science-based policy inputs are essential to translate this potential into credible NDC implementation under the UNFCCC. And that's why at GCISC, we strongly advocate for science-driven policy integration, evidence-based emission factors. We are still working with the tier 1 inventory emission factors, but the need is that we switch towards tier 2. Our targets must be realistic yet ambitious, and that's what we have committed in our NDC. In the end, I will warmly welcome this initiative. When I heard about this initiative of developing or launching of the waste sector working group, so this is very appreciated. GCISC, on behalf of the government of Pakistan, ensures its full support in the proceedings of this working group, and I really hope that this platform will help in designing practical, scalable, and inclusive solutions and that contribute to the climate mitigation, public health, and sustainable urban development. Thank you once again, STPI and partners, for organizing this event and inviting me to say a few words on that. Thank you all. Thank you so much, Mr. Gohir, for that important national framing as well as ensuring your support to this emissions working group. We really look forward to working with you over this particular project. We now move to our first session on practice-based perspectives and implementation realities. And for that, I invite Dr. Aisha Khan, CEO of Akhtar Hamid Khan Foundation, to share her insights on community-led waste management models and how grassroots implementation can contribute to climate mitigation pathways. Dr. Aisha, the floor is yours. Alaikum, and thank you very much to SDPI and Zainab and Amna Apko inviting Akhtar Hamid Khan Foundation to this much needed webinar. And from what I understand, जिस तरह से आप एविडेंस से लेके ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं, तो that's the way it will be successful. वरना as अभी आरिफ साहब ने भी mention किया कि we are very good with defining कि हमारे issues क्या हैं and what we need to do. मसला implementation पे आ जाता है. So I'm going to switch to Urdu and बड़े simple तरीके से let's start with कि इस पूरे process में आप समझें कि 4 basic stakeholders हैं. One are the civil society या households जो कि waste को produce कर रहे हैं. एक big stakeholder is government या municipal agencies जो waste को ज़्यादातर collect कर रहा है, और उनके साथ साथ जो एक बहुत unrecognized sector है जो collect कर रहा है लेकिन currently formal government horizon में या contracts में या कहीं पे नहीं है, is the informal sector. And then industry, चाहे वो plastics की हो, चाहे वो textile की हो, then basically industry is the 4th major stakeholder in this.
So what have we seen? We've been working in waste for the last few decades, and various models, integrated resource recycling centers से लेके community level पे segregation की कोशिशें to composting. What have we learned? The first thing that we have learned is that there are abhi bhi a lot of awareness as well as structural gaps. Awareness at the level of households. बिल्कुल सही है कि households do recognize कि segregate कुछ करना चाहिए, कूड़ा बाहर नहीं फेंकना चाहिए, लेकिन they are जिसे कहते हैं ना constrained by the fact that many of them don't have enough storage in their houses to recycle. अलग-अलग bins में recycle करना is not possible. Daily collection of waste is not possible, neither for the municipal nor for the informal sector, the way it is currently organized. And with the result कि household से जो waste निकलता है, it's very contaminated. And then at the informal sector and at the municipal sector, बहुत सारे जो barriers हैं, storage, transport, sorting की जगहें नहीं हैं. This is where we can learn, and Sahiwal में, along with SDPI, we are trying to develop a first model in Pakistan, Bangladesh or India, Sri Lanka and Cambodia में, along with UNEP ka support, UN Habitat ka support, and government ka support, these models of cooperatives, basically integrated resource recycling centers connected to informal workers who are functioning as cooperatives. So I'm just going to take a very quick 4 or 5 minutes to tell a few models that have worked. Bangladesh में, Dhaka में, I actually went to see waste concern ka very, very functional working model where informal workers ki cooperatives are actually working to collect waste from the households. And in Sri Lanka, for example, they are even doing contracts with the municipal organizations, collecting the material, and local levels पे they are IRCs, जहाँ पे sorting, segregation is also happening and composting is happening. So one of the models जो Pakistan में really can function very well is, instead of a huge at जो हम MRFs कर रहे हैं, what we can have is 4-5 union councils के level पे IRC के models जहाँ पे informal workers are engaged. And जैसे आरिफ साहब ने कहा कि it creates employment, it creates cleanliness, it creates health benefits, and it is fairly low cost. Waste is actually money that can be generated if we position it right. So local IRCs connected to waste, informal waste pickers, key collectives, and connected to the municipal contracts. Because at the end of the day, without financial incentives in which the government is working with the waste pickers, the model can't operate. Sahiwal में, what we have been able to do so far is make a cooperative and bring them to the table with Sutra Punjab ke contractor. The next step is, inshallah, hoping that is saal mein it will happen. But that is one thing. So the involvement of the households or the community is non-negotiable. We need to create awareness that segregation jitni bhi ho sakti hai is important. Two, NGOs can serve a role in making waste pickers key cooperatives and connecting them to municipal agencies, in the case of Punjab or in the case of Sindh, with various contractors.
And then third, the low cost. IRC is a very low cost model. We can pilot it out with very little cost inputs to see कि ये कैसे function होगा. I mean, इंडिया में हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है, पाकिस्तान में stand alone तरीके से हो रहा है, but it is yet not a connected model. So how can the model become connected is the question. Does the model work? Yes, it works. Are informal waste collectors interested? Yes, they're interested agar financial incentive hai. But are they interested immediately? No. There's a lot of trust building. There's a lot of जिसे कहते हैं ना dignity of work. अभी the social taboo also needs to be addressed. But can it be done? Yes, it can be done. Can it be done very quickly? No. It will require a lot of time. It will require training. But कोई भी sustainable cheese has to be done patiently with a lot of training, with involvement of the community. So there is a working model. It is working in other countries, हमारी तरह की low middle income countries, and we truly can apply this model and make it work. So I'll stop here. Thank you very much and look forward to more work. Thank you so much, Dr. Aisha. आपने models जो हमें बताए, they are very helpful, especially जो IRC model है. But again, the question remains कि उसको connected किस तरह बनाना है? A model that is already working and functioning in countries similar to Pakistan. We look forward to explore this question in our webinar as we move forward. Next, I invite Ms. Rabia Razak, Senior Program Officer, International Label Organization, to reflect on labor dimensions and informal sector integration within waste management system. Ms. Rabia, the floor is yours. Thank you very much, Amna. Thank you, Zainab, also for her opening. I think that was, anchoring a lot of areas that need our attention. I think कुछ हमने colleagues से already सुना है about how the nexus of informal comes into play. But when we talk about NDCs, we usually talk about targets. We talk about technology upgradation or infrastructure. We somehow somewhere miss the human element, especially informal waste workers, जिनका अभी आयशा ने जिक्र किया है, but how they're impacted, and this is not a homogeneous group. They have women, they have somewhere sometimes children involved. So first of all, it's important to consider climate transitions as economic transitions, and economic transitions की जब हम बात करें तो उसका एक impact जो है वो हर इंसान पे जो उसमें involved है उस पे मुख्तलिफ differently होगा. साथ ही में ऑफ कोर्स वी नीड टू रियलाइज कि जब हम एनडीसी की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर बात करते हैं और टारगेट सेटिंग के ऊपर बात करते हैं तो हमें ये भी देखना है कि अच्छा अगर हम टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की बात करें या हम लैंडफिल्स की को एड्रेस करने की बात कर रहे हैं, हम लैंडफिल्स पे जो वॉल्यूम्स हैं उनको रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं, तो हमें रिड्यूस करने के लिए सेग्रीगेशन के स्किल्स चाहिए, हमें इनोवेटिव टेक्नोलॉजी लाने के लिए लोगों को स्किल्स करने की ज़रूरत है, हमें ग्रीनर स्किल्स ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है, which basically means that we need just transitions for people so that their livelihoods are not compromised. So we are in one way not only addressing climate shock or climate resilience, but we also reshaping and making livelihoods more resilient. और जैसे कि मैंने कहा इसमें important ये है कि हम identify करें, map करें कि who is most impacted. उसी तरह ये मैप करना भी बहुत ज़रूरी है कि मार्केट्स में कौन कौन से स्टेक होल्डर्स, 4 मेन स्टेक होल्डर्स के ऊपर आयशा ने अटेंशन ड्रॉ की है. तो उसी मैपिंग में, इसी एंटिसिपेटरी प्लानिंग में वी नीड टू understand who is vulnerable, whose stakes are most sort of, demand you to design your mitigation strategy around. Compensation strategy में किसको advantage होना चाहिए, कहाँ पे हमें ख़वातीन की specific vulnerabilities को address करना है, so and so forth.
फिर आयशा ने कुछ थोड़ा सा फॉर्मलाइजेशन के ऊपर भी बात की, एंड आई थिंक एक चीज which maybe I'll add in you know and build on her comments is essentially looking at this informal workers as environmental service providers. So हम उनको सिर्फ एक input to the chain ना देखें, हम उनको environmental service providers के तौर पे देखें, ताकि हम उनकी ग्रोथ में और उनको बिल्ड करने में मदद कर सकें. अब वो हम कैसे कर सकते हैं? कुछ एग्जांपल्स जो आयशा ने जिक्र किया है कि हम उनकी कोऑपरेटिव्स बना दें, हम उनको म्यूनिसिपल के साथ जोड़ दें. और इसका मतलब स्पिरिट क्या है कि हम उनको फॉर्मलाइजेशन की तरफ लेके जाएं. फॉर्मलाइजेशन की मुख्तलिफ नेचर और टूल्स हो सकते हैं कि हम उनको नेगोशिएशन और कलेक्टिव बार्गेनिंग की पावर दें. when they come together, when they join forces, तो उनकी collective bargaining power जो है वो बढ़ जाती है. Another sort of area of attention is value chain development. अब informal waste picking जो है उसके अंदर itself या waste alone has many sub thematic areas to it. किस किस्म का वेस्ट है, कहाँ पे जा रहा है, वो किन मार्केट्स में आगे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, उससे क्या चीज़ें बन रही हैं. अगर हम एक दो वैल्यू चेन्स को उठा लें और हम आइडेंटिफाई करें कि इसमें वैल्यू एडिशन के कौन से रिसाइक्लेबल मटेरियल्स हैं, हम वैल्यू चेन्स में जो मार्केट सिस्टम्स हैं उनको कैसे डेवलप कर सकते हैं, हम एंटरप्राइज मॉडल्स कैसे डेवलप कर सकते हैं ताकि हम इन जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं उनकी लाइवलीहुड्स को बेहतर कर सकें और उनको अल्टरनेटिव एंड सेफर लाइवलीहुड्स की तरफ भी लेके जा सकें. So जब हम सेफ्टी की बात करते हैं तो आई थिंक ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ विच इज an area which ILO focuses on, and which is quite severe in terms of its implementation, and if you look at waste sector तो उसमें काफ़ी sort of significant है कि occupational safety and health में उनके स्किन डिजीजेस, रेस्पिरेटरी डिजीजेस, आपके कट्स लग जाना. अच्छा, उन कट्स की वजह से स्पेशली आई थिंक आयशा ने ये भी कहा था कि जो घर से गंद निकलता है वो बहुत हेजिडस होता है, उसमें सिरिंजेस, आपकी मुख्तलिफ औजार ऐसे भी होते हैं, हस्पतालों का गंद. सो जब ये सॉर्टिंग हो रही होती है तो उसमें not having PPEs, not having protective gear, not having the correct training and understanding of how to segregate waste, chemicals ka exposure, all of this requires training in safe waste handling, but also regulatory enforcement. So I think occupational safety and health tends to be, an area which has heightened importance, especially when we're talking about this particular वेस्ट वैल्यू चेन. फिर अच्छा, सोशल प्रोटेक्शन की हम जब बात करते हैं तो इनफॉर्मल इकोनॉमी है तो हमें पता है कि दे नॉट कवर्ड बाय इनकम सिक्योरिटी भी उनकी इज लार्जली थ्रेटन्ड, बट हेल्थ इंश्योरेंस उनकी नहीं होती है. म्यूनिसिपल से बाहर जब मैं निकलूँ, और म्यूनिसिपल में भी नॉट एवरी वर्कर इज परमानेंट वर्कर, सो उसमें भी हम इनफॉर्मेलिटी देखते हैं. और फिर ऑफ कोर्स उनके अगर हम उनको कोऑपरेटिव्स बना दें या उनके कोई क्रेडिट सेविंग ग्रुप्स बना दें तो हम उनकी कोई इस तरह की डिज़ाइन कर सकते हैं कंट्रीब्यूटरी सोशल प्रोटेक्शन स्कीम के जिससे उनको बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाए. एंड दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग नाउ इन पंजाब, जिसमें आयशा ने साहिवाल का जिक्र किया. हमने लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी से एक तो जो उनके 18,000 वर्कर्स थे, हमने उनमें काफ़ी ज़्यादा वर्कर्स को फॉर्मलाइज करवाया थ्रू contractual agreements, but also के contractual agreements में जो आपके जो वर्कर्स कॉन्ट्रैक्ट पे भी आएंगे थर्ड पार्टी से, उनको भी आप सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के साथ डालें. सो दे डिड अ मेन्यू, अ ला कार्ट मेन्यू ऑफ सॉर्ट्स, जिसमें उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, इसमें क्योंकि फिजिकल स्पेस आपको चाहिए, यू नीड फंडिंग, तो हम इसमें पूरे 8 जो फॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी के प्रोविजंस मिलते हैं, हम वो तो नहीं दे सकते, लेकिन हम ये करते हैं कि हम वहाँ पे लेट्स से हम, क्योंकि हेल्थ के सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स चाहिए इनको, या हेल्थ में सबसे ज़्यादा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस आता है, तो let's do health and sickness benefits, let's do injury protection. So ये इस तरह से आप एक indigenous model जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं specifically to cater to informal sector workers इस particular waste value chain में.
अच्छा, फिर स्किल्स और ग्रीन स्किल्स के ऊपर मैंने थोड़ी सी शुरू में बात की थी। अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम सर्कुलैरिटी के ऊपर जब बात करें, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग के ऊपर बात करें, तो हमें अपने टारगेट्स में ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट और स्पेशली बिकॉज वी डोंट वांट जस्ट न्यू जॉब्स, वी वांट सेफर जॉब्स। अब सेफर जॉब्स में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के हवाले से और ह्यूमन प्रोटेक्शन के हवाले से वी नो कि ग्रीन स्किल्स address climate deterioration, but it also enhances human endowment. So उसमें उनकी अगेन किस किस्म के ग्रीन स्किल्स की ज़रूरत है, किस किस प्रोसेस के अंदर एंगेजमेंट में इंसान को ज़रूरत हो सकती है उस स्किल की, और वहाँ पे ग्रीनिंग के क्या मौके हो सकते हैं। हम किस किस्म के लेट्स से केमिकल्स को रिड्यूस करने के लिए हम किस किस्म की ट्रेनिंग करें जिससे जो केमिकल्स ऑफ कंसर्न्स हैं या परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स हैं उससे उनकी जो एक्सपोजर है वो कम हो। So that is one model that we tested in textile sector. We have not come down to scraps or waste, but that's also an area where we want to scale. और मेरा आधा मिनट रह गया 8 मिनट होने में, इसलिए I'll end with what I consider the most important at ILO, and that's engaging this informal waste value worker in social dialogue. हमारे यहाँ पॉलिसी साजी हो जाती है, उसके बाद लोगों के पास लेके जाया जाता है कि जी इस तरह आपको फर्क पड़ेगा या इस तरह फर्क नहीं पड़ेगा। सो वर्कर का एंगेज होना इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, बट नॉट जस्ट थ्रू आउट उसके उस प्रोसेस में इंगेज रहना जो है वो उस प्रोसेस की ज़ाहिर है लेजिटिमेसी तो बढ़ाता है, लेकिन जो वर्कर है वो गिव्स देम सेंस ऑफ कनेक्शन, सेंस ऑफ ओनरशिप टू द प्रोसेस। और उस प्रोसेस में बिकॉज दे आर द मोस्ट सॉर्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स एट स्टेक, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनको उस प्रोसेस का हिस्सा बनाएं। अब क्योंकि उनकी हमें पता है ट्रेड यूनियन डेंसिटी पाकिस्तान में वैसे ही बहुत लो है, तो क्यों उनकी मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन में अगेन हम महदूद रह जाते हैं कि अच्छा हाँ ठीक है वर्कर्स को इनवाइट कर लो, ठीक है उनको भी बिठा लो, लेकिन अगेन डू वी इनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन, डू वी रियली सॉर्ट ऑफ इनकॉर्पोरेट feedback from workers? And then again, like I said, this is not a homogeneous group. तो workers कौन से workers? वो workers जो सिर्फ उठा रहे हैं, collect कर रहे हैं और आगे जाके aggregators को दे रहे हैं, वो जो segregation कर रहे हैं, वो जो आगे recycle करेंगे। So ये हमें थोड़ा सा we need to be inward looking and maybe also a little forward looking कि हम ये देख सकें कि अच्छा हमें what kind of waste sector do we want in our country, और उससे हम कैसे livelihoods के मौके create कर सकते हैं। I think GCI से जो हजरत थे उन्होंने यही बात की कि ये एक job creation का बहुत बड़ा sector है, लेकिन again like I said, number of jobs but also quality of jobs. I'll stop here. Thank you. Thank you so much, Ms. Tabia, for enlightening us with the human angle of this waste value chain. Connecting with what you said in the end, कि हम इनको encourage नहीं करते, और I would like to listen to the informal waste worker representative, Mr. Hafiz Sahab. हाफिज साहब, हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आप अपने रोज़मर्रा के कुछ तजर्बात हमें बताएं कि आप लोग किस तरह से कचरा इकट्ठा करते हैं, आप लोगों को किन मुश्किलात का सामना है, और आपके ख्याल में इस निज़ाम को किस तरह से बेहतर बनाया जाता है। ख़ास तौर पर आप हमें अगर ये बताएं कि अगर अलग अलग करके कचरा आपके पास आए तो क्या आपका उस आपके काम पे उसका क्या असर पड़ेगा, और आप क्या समझते हैं कि आपके जो अंडर लोग काम करते हैं वेस्ट वर्कर्स, उनकी जिंदगियों को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम हाफिज मोहम्मद शफीक है, मेरा रिसाइकलिंग का यूनिट है। हम ऐसे करते हैं ना, हम जो छोटे छोटे घरों से कचरा उठाने वाले हैं ना, वो ला के देते हैं कबाड़ियों को छांट के, फिर कबाड़िए उसको अलग-अलग आइटमों को छांटते हैं, जिसमें से ये जो पेट बोतल एक आइटम है, प्लास्टिक की नहीं है, ये पेट की है, इसको पेट बोतल बोलते हैं, ये हमें फिर देते हैं। हम हमारे जो लेबर होती है वो आगे इनसे उठा के ले जाते हैं, फिर हमारे फैक्ट्री में जो लेबर होती है वो इनको छांटती है कलर वाइज, ग्रीन को लैदा करती हैं, वाइट को लैदा करते हैं, और फिर इनके ढक्कन उतारती हैं और लेबल उतारते हैं। फिर हम इसको क्रश करते हैं, यानी कि कोई हम आग वगैरह नहीं जलाते जिससे माहौलियात को कोई फर्क पड़े, ना हम इसको कोई आग इस्तेमाल करते हैं।
हमारे यूनिट पे। फिर हम इसको सिर्फ क्रश करते हैं, इनका चूरा बना देते हैं और इनको पानी से धो के फिर हम इसको थैलों में पैक करके इनको भेज देते हैं फाइबर मिल में। वो फाइबर मिल साहिवाल में नहीं है, लाहौर या फैसलाबाद या मुल्तान, जिधर मुनासिब होता है उधर हम उसको भेज देते हैं। फिर वो इनका आगे पोलिस्टर बनता है और फिर आगे वाले प्रोसीजर चलते हैं इनके। पोलिस्टर से फिर धागा भी बनता है, सारा कुछ बनता है। हमारे जो ये सिस्टम यही ना कि हमारे पास इधर वो एक दूसरा सिस्टम होता है कि जो इनको अच्छे वाली वॉशिंग से धो के अच्छे वाला कटिंग करके, छोटा छोटा कटिंग करके फिर इनकी पेट पेट बोतल की जो रॉ मटेरियल है ना, उसको हम प्री फॉर्म बोलते हैं, वो बनाते हैं। वो बनाने के लिए फिर वापस दोबारा इसकी बोतल भी बन जाती है, रिसाइकलिंग बोतल बन जाती है, जो ये छोटे यूनिट इस्तेमाल करते हैं। लोकल यूनिट यानी कि मिनरल वाटर वाले या जूस वाले या कोई सब ज़रिए दियात वाले लोग इस्तेमाल करते हैं इसकी बोतल बना के। हमारे पास इधर जो है ना प्री फॉर्म बनाने का कोई सिस्टम नहीं है। हम इधर हमारा माल पहले जाता है लाहौर, लाहौर से फिर प्री फॉर्म बन के फिर वापस साहिवाल आता है। और इधर हमारे दोस्तों ने जो ब्लो मशीन लगाई हुई है जिससे वो दोबारा बोतल बनाते हैं। तो जो हमारे साथ यही चैलेंज है कि हमारे साथ इधर तामन किया जाएगा, हम इधर कोई ऐसा ये यूनिट लगा लें कि कोई हम ये जो हमें खर्चा डबल पड़ता है कि हम इधर से एक मटेरियल बना के फैसलाबाद भेजा या लाहौर भेजा, उधर से दोबारा उसकी प्री फॉर्म बना, फिर वापस आया, फिर हमने दोबारा बोतल उसकी तैयार करके मार्केट में दी। ये जो और जो हमारी लेबर होती है उनके लिए हम पूरी सेफ्टी का इंतजाम करते हैं। उनको ग्लव्स दिए हुए हैं, उनको एंड के दिए, उनको कैप दिए हुए हैं, उनको शूज वगैरह दिए हुए हैं, उनको मास्क दिए हुए हैं जो वो अपनी हिफाजत के लिए। फिर अगर ज्यादा धूप हो तो छांव का इंतजाम करते हैं, सर्दियों में धूप के लिए धूप में उनको बिठाते हैं। यानी कि हम उनका पूरा पूरा ख्याल करते हैं और सारा सिस्टम हम चलाते हैं। शुक्रिया जी। हाफिज शफीक साहब, अगर आप हमारे साथ हैं, मुझे एक बात बताइए कि ठीक है, आपका तो बड़ा जबरदस्त आप काम कर रहे हैं। मुझे बताइए कि आप मतलब क्या आप चाहेंगे कि आपको हुकूमती सतह पे क्या सपोर्ट चाहिए? आपका यूनिट तो चले लग जाना चाहिए, वो मैं समझ गई आपकी बात, लेकिन जो आपकी लेबर है उनके लिए आपको क्या लगता है, क्या सपोर्ट होनी चाहिए? और आपको ये लगता है कि घरों से जो कचरा उठाया जाता है वो कचरा अलैदा अलैदा होना चाहिए, प्लास्टिक अलग हो, किचन का गंद अलग हो, या इकट्ठा ही मिलके आपके लिए आसानी होती है? कैसे आसानी हो सकती है उसमें आपके लिए? हमारे लिए तो यही आसानी होती है ना कि अगर हमें कलर वाइज अलग अलग मिल जाएंगी तो हमारा अब वो खर्चा बच जाएगा जो लेबर को हम देते हैं। मगर वो जैसे सारा एक सिस्टम, एक चैन बनी हुई है कि इधर आपको तो पता है कि इधर पाकिस्तान में लोगों के पास इतनी अवेयरनेस नहीं है। जो बाहर के मुल्कों में लोग हर चीज का कचरा उनके घरों के बाहर बास्केट लिखे हुए हैं, वो अलग अलग कचरा खुद ही डाल देते हैं। और हर हुकूमती अदारा अपनी गाड़ी लेके आता है और अपनी चीज, लोहे वाले लोहा उठा के ले जाते हैं और प्लास्टिक वाले प्लास्टिक, बोतलों वाले बोतलें उठा के ले जाते हैं। इधर कोई ऐसा कोई इंतजाम नहीं है। वो सारा फिर जो घर के काम करने वाली खवातीन होती हैं या मर्द होते हैं वो सारा इकट्ठा उठा के ला के कबाड़ी को दे देते हैं और कबाड़ी आगे अपनी जो उसको है छांटी वगैरह कर लेते हैं। और इसके लिए तो फिर वही सहूलत है ना कि ये बड़े लेवल के काम है, ये इतनी जल्दी पाकिस्तान में नहीं हो सकते कि पाकिस्तान में इतनी तो अवेयरनेस नहीं है। अभी आपने ये काम शुरू किया है तो इससे लोगों को बहुत अच्छी अवेयरनेस आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता हमें भी पता चल रहा है और सब लोगों को भी अवेयरनेस दे रहे हैं। आपका ये जो महकमा है आप अच्छा काम कर रहे हैं, जी जहरा बहुत आहिस्ता आहिस्ता शुक्रिया। अवेयरनेस होंगी। जी जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने दिन में से टाइम निकाल के हम हमें ज्वाइन किया और हमें बताया कि आप काम कर रहे हैं। आप अपने बलबूते पे जो भी काम कर रहे हैं वो बेहतरीन है। और हम इस प्लेटफॉर्म से कोशिश करेंगे कि आपकी जो चैलेंज है, जो मसाइल है, आपको उसका हल तलाश कर सके। और वहाँ पे अख्तर हमीद खान फाउंडेशन भी है, हमारा इदारा भी है, बाकी इदारे भी और हुकूमत के इदारे भी शामिल हो जाएं कि कोई सिस्टम ऐसा बना देंगे जिसपे आपको हम आसानी दे सकें और आपकी जो लेबर है उसके लिए आसानी दे सके। तो हम इसको जारी रखेंगे और आपको मजीद तकलीफ देंगे कि आप हमें मजीद बता सकें इस बारे में। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ओवर टू थैंक यू। यू।
Thank you so much. I would now invite Ms. Angel Imdad, CEO Arvert, to share insights from the private sector and discuss scalable mitigation models. Ms. Angel, the floor is yours. Assalamu alaikum to everyone. Thank you so much for inviting me, SDPI especially, and for holding this extremely important discussion and highlighting that waste sector is very crucial and very important to take care as well. So जैसे I'm very glad कि multiple sectors को यहाँ पे involve किया गया है, and especially to invite Mr. Hafiz शफीक साहब, बिकॉज ऑन ग्राउंड जब तक हमें प्रॉब्लम्स नजर पता नहीं चलती, हमें लगता है हम सही डिसीजंस बना रहे हैं और हम पॉलिसीज भी सही बना रहे हैं, बिकॉज जब तक हम उनके साथ रह के उनको सीखते नहीं हैं, सो तब तक हमें नहीं पता चलेगी चीजें. आई स्टार्ट ऑफ विद बिकॉज वेस्ट मेरे हिसाब से आई एम एन एनवायरमेंटिस्ट बाय प्रोफेशन एंड द कंपनी नेम इज इरविर्दे गोगरी. इट्स एक्चुअली अ वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जिसके अंदर हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. जैसे हाफिज साहब के पास आ रही हैं चीजें रिसाइकलिंग के लिए पेट की और बाकी सारे मटेरियल्स प्लास्टिक के, हम प्रोवाइड करते हैं वेस्ट कलेक्शन करना ऑन पॉइंट, वेदर दे आर इंडस्ट्रीज, कॉर्पोरेट्स, रेजिडेंशियल्स एज वेल. और वहां से बिकॉज देखिए वेस्ट सेक्टर जो है ना उसके अंदर हर एक चीज इज इम्पॉर्टेंट, भले वो ऑर्गेनिक हो, भले कोई भी मटेरियल हो, हमें इसलिए सिर्फ उसकी रिकवरी नहीं करनी बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी रिसाइकल्ड या उसकी वैल्यू है, बट इट विल बिकम अ प्रॉब्लम अगर वो रिसाइकल नहीं हुई और वो लैंडफिल में एंड हुई, वेदर इट्स एनी मटेरियल. तो जस्ट मुझे मेरे हिसाब से एनवायरमेंटल प्रॉब्लम वेस्ट नहीं है, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ डिजाइन. हमारे यहाँ पे डिजाइनिंग की मसला है. सबसे पहली चीज मिस आयशा ने एंड मिस राबिया ने भी इसके अंदर काफी ज्यादा बात की है, पहले मिस्टर आरिफ ने भी, कि ऑन पॉइंट वेस्ट सेग्रीगेशन इज द की. आई ऑलवेज से दिस, द की टू वेस्ट इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सोल्यूशन इज ऑन पॉइंट सेग्रीगेशन. हम आसान लफ्जों में मेरी कंपनी, और एक चीज यहाँ पे मैं मेंशन करती चलूँ, आई फील वेरी हैप्पी कि मैं यहाँ पे सिंध को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जितने लोगों ने बात की वो पंजाब साइड से की. और अगर हम वैसे अगर इसका मुआयना करें कि कराची सिंध की चले बात कर लें और पंजाब की बात कर लें, तो मेन सिटी लाहौर और कराची की अगर बात करें तो कराची अभी जितना एस्टिमेटेड है 16,500 टन एवरी डे जनरेट करता है, वेयर एज अगर लाहौर की बात करें तो इट्स अप्रोक्सीमेटली 5,000 टन अ डे. सो 3 टाइम्स मोर कराची के इश्यूज हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे फिर भी उस तरह से ध्यान नहीं दिया जाता वेस्ट के अंदर. बट लकीली हम जैसी कंपनीज और कुछ और भी कंपनीज यहाँ पे काम करने की कोशिश कर रही है, एंड इनफॉर्मल सेक्टर इज एक्चुअली द बैकबोन ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर. क्यों? क्योंकि जहां पे हम नहीं भी पहुंच पा रहे ना, शायद मेरी लोग या मेरी गाड़ियां रोज सुबह के 7 बजे 8 बजे जो है वो लेबर हर घर के बाहर नहीं पहुंच सकता, लेकिन जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो भले स्क्रैप को बेचने के लिए ही वहां पे पहुंचते हैं, बट वो पहुंचते हैं, वो उसको वेस्ट को पिक करते हैं. तो अगर उनको यहाँ पे इंटीग्रेट नहीं किया जा रहा, अगर हम जैसी कंपनीज या यहाँ पे जितने लोग एक सोल्यूशन की बात करें वो नहीं कर पा, वो अगर इंटीग्रेट नहीं कर रहे इनफॉर्मल सेक्टर को, आई गेस देयर इज अ ह्यूज गैप. एंड उसकी वजह से हम यहाँ पे रिसोर्स मटेरियल की नहीं बल्कि अपने ह्यूमन रिसोर्स को भी हम यहाँ पे माइनस आउट कर रहे हैं और उनको सही तरह यूटिलाइज नहीं कर रहे. दूसरी चीज ये है कि जैसे मिस आयशा ने बात की यहाँ पे बड़ी अच्छी, कि इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सोल्यूशन. सो हाउ वी वर्क, हमने यहाँ पे टेयर फंड ने भी कराची के अंदर 2 साइट्स पे हरियाली हब के नाम से डेवलप किए थे, जो कि पंजाब में भी उन्होंने किए हुए हैं, आई नो दैट फॉर अ फैक्ट. सो वहां पे उन्होंने सारी चीजें इस तरह से की थी कि सारा वेस्ट कलेक्ट होके आ रहा है उस जगह पे, देन उसके बाद वो सेग्रीगेट हो रहा है इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, एंड देन उसकी रिसाइकलिंग की यूनिट्स भी लगाए गए थे. सिमिलरली, ये तो टेयर फंड की मैं बात करी थी, बट सिमिलरली हमने 2019 से काम शुरू किया, जो कि डॉक्टर आयशा भी बात करें कि वहां पे डेवलप इस तरह से होना चाहिए. कराची के अंदर वी आर डूइंग दैट, वी आर कलेक्टिंग फ्रॉम ऑन पॉइंट सोर्स. और वहां पे हम ऑन पॉइंट पे क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि हर चीज डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में सेक्शंस में सेग्रीगेट करना इज रियली डिफिकल्ट. जैसे हाफिज साहब अभी यहाँ पे मेंशन कर रहे थे, यस, पेट, अगर पेट ही अलग हो जाए तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है. आगे कलर कोडिंग में तो बहुत मेरे ख्याल से आगे कहानी है, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि हम हाफिज साहब ने जैसे कहा कि हम ये भी इंशाल्लाह होपफुली कर सकें इन द कमिंग ईयर्स. बट हम उसको कलेक्ट करते हैं और हम कहते हैं कि एटलीस्ट सिर्फ आप ऑर्गेनिक, जो कि गीला कचरा है, और सिर्फ सूखा कचरा है, विच आर द रिसाइकलेबल्स, आप उन्हीं को अलग कर दें तो हमारी बहुत ज्यादा वेस्ट जो है वो रिकवर हो पाएगा. बिकॉज अगर गीला कचरा सूखे कचरे के साथ मिलता है तो पेपर, टिश्यू, MLPs, मल्टीलेयर प्लास्टिक, ये सब वैसे ही खराब हो जाते हैं. फिर उसको धोना, उसको फिर इस हालत में लेके आना कि वो रिसाइकल हो सके, दैट इज अ ह्यूज इशू.
in terms of पैसा and in terms of मेहनत as well. Both resources हमारी यहाँ पे जाती हैं, but still we do that. हम collect करते हैं for corporates, institutions, residential housing societies as well. हम उसको collect करके अपनी जगह पे लेके आते हैं. Then हमारा labor जो है उसको further different categories के अंदर अलग करता है. और categories यहाँ तक हम अलग करते हैं कि एक छोटा छालिया का रैपर से लेके टिश्यू तक हमारे पास अलग हो रहा होता है. और फिर उसके बाद वो रिसाइकल होता है. कुछ रिसाइकलिंग यूनिट्स हमारे अपने पास लगे हैं. फॉर एग्जांपल फूड वेस्ट जो कि 50 to 60% जहां पे हम यहाँ पे बात भी कर रहे हैं एनडीसीज के अंडर मीथेन एमिशंस की बात करें, तो फूड वेस्ट को अक्सर हम छोड़ देते हैं कि व्हाट्स द बिग डील, उससे डिग्रेड हो जाना है. हम हमेशा प्लास्टिक्स की बात करते हैं. बट टॉकिंग अबाउट द फूड वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट, इट्स 50 to 60% ऑफ द इंटायर वेस्ट जो कि हमारे नॉर्मल भी निकल रहा होता है. और ये क्यों प्रॉब्लम है? लैंडफिल में इसको भर दे, कोई मसला नहीं है, डिग्रेड तो हो जाएगा. नहीं होगा, होगा, बट किस तरह से होगा? एनारोबिकली डिग्रेड होगा, which will emit 80% of more emissions, carbon emissions, methane emissions, जो कि कार्बन emissions से 21 times more harmful है. So हम जो GHG प्रोटोकॉल की बात करते हैं, हम कार्बन emissions को रिड्यूस डाउन बात करने की बात करते हैं, तो अगर हमने वेस्ट सेक्टर के अंदर इस पे ध्यान नहीं दिया तो हम we stand nowhere literally. So हमारी जगह पे food waste is converted into compost, aerobic digestion के थ्रू, एंड देन उसके बाद जो बाकी सारा वेस्ट है हम उसको रिसाइकल कर रहे होते हैं. अच्छा, कुछ जो वेस्ट है जैसे हाफिज साहब कर रहे हैं, बाकी भी रिसाइकलर्स कुछ कर रहे होते हैं, इनफॉर्मल या फॉर्मल. सो वी रिसाइकल एवरीथिंग. जैसे पेट बॉटल फाइबर में कन्वर्ट हो रहा है या फिर प्लास्टिक की बोतल ही दोबारा बन रही है, कन्वेंशनल वे को हम वैसे ही होने देते हैं. वी हैव रिसाइकलर्स ऑन बोर्ड, सर्टिफाइड रिसाइकलर्स ऑन बोर्ड. बट कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि रिसाइकल नहीं हो पाते. फॉर एग्जाम्पल एमएलपी है, इट्स डिफिकल्ट टू रिसाइकल. देन वुड वेस्ट रिसाइकल होता है बट उसको हम अपसाइकल करने की कोशिश करते हैं. देन देयर इज अ लॉट ऑफ फैब्रिक वेस्ट. फैब्रिक वेस्ट को भी हम दूसरी चीजों में कन्वर्ट कर रहे होते हैं. तो हमारी कोशिश. देन टिश्यू वेस्ट, टिश्यू को भी हमें ऐसे लगता है टिश्यू की क्या ही अहमियत है, बट व्हेन वी स्टार्टेड वर्किंग विद कॉर्पोरेट्स तो हमारे पास टनों के हिसाब से टिश्यू वेस्ट आता है. एंड वी आर माइंड ब्लोन मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि हम कितनी रिसोर्स अपने कॉर्पोरेट्स के अंदर हमें अंदाजा भी नहीं होता. हम टिश्यू ऐसे 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 निकालते हैं एंड वी जस्ट वेस्ट इट, एंड वो कितनी एमिशंस क्रिएट कर रहा है, कितना मटेरियल हमारे पास आ रहा है. सो फिर हम उसको पूरा से रिसाइकल करके. अच्छा, हमारी कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती. एक नॉर्मल रिसाइकलर की तरह या स्क्रैप डीलर की तरह जितना हम आपके यहाँ से किसी भी कॉर्पोरेट, किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी रेजिडेंशियल सोसाइटी इवन के साथ काम करते हैं, तो जितना वेस्ट हम कलेक्ट कर रहे हैं उसके डेटा, देन उसके बाद वो कितना रिसाइकल हो रहा है, अपसाइकल हो रहा है उसका डेटा, उसकी मेथोडोलॉजी क्या हुई है, रिसाइकल हुई है, अपसाइकल हुई है, कॉम्पोस्ट हुई है, वो इंफॉर्मेशन. एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द कार्बन एमिशन रिपोर्टिंग ऑफ द ईच एंड एवरी कैटेगरी. हर एक कैटेगरी की, वेदर इट्स पेट, वेदर इट्स एमएलपी, वेदर इट्स टिश्यू, हर एक की कैटेगरी को हम इवेलुएट करते हैं कार्बन एमिशन. एंड देन वो पूरी रिपोर्ट हमारे क्लाइंट्स के पास जा रही होती है. यहाँ पे शायद कुछ ये सोच रहे होंगे कि उसकी जरूरत क्या है, रेजिडेंशियल को क्या ही जरूरत है. टॉकिंग अबाउट, अभी जैसे आरिफ साहब भी बात कर रहे थे, होपफुली वेरी सून वी विल बी एंटरिंग इनटू द फेस ऑफ कार्बन ट्रेडिंग एज वेल. सो एट द मोमेंट हमारे पास डेटा ही नहीं है, हमारे पास एक्यूरेसी ही नहीं है डेटा की. सो वी आर प्रिपेयरिंग आवर क्लाइंट्स विद दैट डेटा. और वो डेटा जब होपफुली वेरी सून पाकिस्तान विल एंटर इनटू कार्बन ट्रेडिंग एज वेल, छोटे लेवल के ऊपर भी, तो हमारे जो क्लाइंट्स है दे विल बी रेडी टू ट्रेड दैट ऑफ, बिकॉज दे विल बी हैविंग डेटा, उनके पास सारी इंफॉर्मेशन होगी. एंड डेटा इज एट द एंड ऑफ द डे, डेटा इज द की. सो हमारी पूरी कोशिश है एक होलिस्टिक अप्रोच करने की. यहाँ पे एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि मिस रबिया ने बहुत इंपॉर्टेंटली उसके ऊपर एम्फोसिस किया, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी. आई एम एन ओशास आयोश ऑडिटर एज वेल माई सेल्फ. तो मेरी साइड के ऊपर हम बहुत इस बारे में कोशिश करें, फायर सेफ्टी, हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ एंड सेफ्टी के प्रोटोकॉल्स, देन उसके बाद उनकी सारी, मेरे जितने वर्कर्स हैं उनके साथ हम उनकी वैक्सीनेशन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस होता है. हाउ दे आर डीलिंग हैंडलिंग द वेस्ट, इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस होता है. उनके चेकअप्स हो रहे होते हैं, बिकॉज वो किसी बीमारी से तो नहीं दो चार हो गए ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग द वेस्ट. इस सब चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस होता है. एंड देन बीइंग अ कंपनी ओनर, अ फीमेल कंपनी ओनर, यहाँ पे फीमेल्स के अंदर हमारा बहुत ज्यादा काम है, बिकॉज घरों के अंदर या किसी भी जगह के अंदर फीमेल्स आर द वन हु मेक दिस डिसीजन, कौन सी चीज एज अ कचरा बाहर जाएगी या कौन सी चीज घर में दोबारा से इस्तेमाल हो पाएगी. सो ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो हम बात कर रहे हैं ना, बॉटम डाउन अप्रोच, बॉटम टू अप अप्रोच, तो वहां पे हमारी फीमेल्स कितना रोल प्ले कर पा रही हैं अपने घरों के अंदर,
क्या हम उनको ये सिखाते हैं क्या ये वेस्ट वेस्ट भी है, घर से बाहर निकलने की भी जरूरत है, या फिर आप उसको अपसाइकल रिसाइकल करके या कॉम्पोस्ट करके यू कैन यूटिलाइज दैट आउट योर होम एज वेल। और बहुत दफा हमने ट्रेनिंग्स दे के ये हमारी लियारी, खारादर और पठान कॉलोनी जैसी छोटे एरियाज इन कराची, हमने यहाँ पे खवातीन को ट्रेन भी किया है टू अपसाइकल एंड रिसाइकल देयर वेस्ट एंड स्टार्ट सेलिंग दैट ऑफ एंड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एज वेल। सो यहाँ पे जस्ट हम सिर्फ ये काम नहीं कर रहे कि हमने एक कंपनी शुरू कर दी रिसाइकलिंग के लिए, बट वी आर एम्पावरिंग अदर्स एज वेल एंड स्पेशली फीमेल सेक्टर इन दिस, ताकि हम, और अभी तो मेरे ऑफिस स्टाफ तक थोड़ा महदूद है फीमेल्स की इंटीग्रेशन, बट होपफुली वेरी सून वी विल बी इंटीग्रेटिंग फीमेल्स इन द वेस्ट हैंडलिंग साइड एज वेल एट आवर साइड। सो ये कुछ चीजें जो हम कर रहे हैं। थोड़ी सी मैं बात एंड में करना चाहूंगी, सिर्फ दो तीन चीजों, एक चीज के ऊपर कि हमारे यहाँ पे लूप होल्स जो हैं हमारे, हम क्यों जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। जस्ट अ सेकेंड, आई जस्ट गो थ्रू माय नोट्स। वैसे तो मैंने काफी सारी बात कर ली, बस एक चीज के ऊपर जो यहाँ पे है, डिसेंट्रलाइज्ड ऑफ कोर्स वेस्ट मॉडल्स। एक तो मैंने डिजाइन की बात की, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम हमारे यहाँ पे कलेक्शन ना वॉल्यूम्स के ऊपर ध्यान दिया जाता है। अभी मैं सिंथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के साथ भी बात करती हूँ, तो वो ये बात करते हैं कि कितना वेस्ट जो है वो लैंडफिल में पहुंच चुका है। वो ये बात नहीं करते हैं कि कितना रिकवर हुआ है, कितनी आउटकम डाइवर्ट हुई है उसकी वजह से। तो आर फोकस एंड हमारी डिजाइन, हमारी पॉलिसीज इसके ऊपर फोकस करनी चाहिए कि डाइवर्जन के ऊपर क्या बात हो रही है, लैंड फिल्ड वॉल्यूम्स के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए हमें, बिकॉज दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है और अभी हम कलेक्शन ही नहीं कर पा रहे। सो यहाँ पे हमें ये बात करने की बात है। एंड देन उसके बाद जो हम बात कर रहे हैं रिसाइकलिंग की, हमारी मिथेन एमिशंस, और जितनी हम एमिशंस डेटा की मैं बात कर रही हूँ, हमने डाइवर्जन तो कर दी, लेकिन कितनी डाइवर्जन की है जब तक हमें पता ही नहीं होगा, सो हमारी सारी एफर्ट्स विल गो इन वेन। सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंटर्स जो आई थॉट के आई शुड डिस्कस as the practices that we have in our system at the moment at my company, and as well as जो हमारी एक तरह से लूप होल्स हैं कुछ उसके ऊपर। एंड डेफिनेटली लास्टली द इनफॉर्मल सेक्टर इज सो important whether they are coming from a particular ethnicity or not. We should applaud their services because it's really very important, otherwise we will stand nowhere. And at the same time, lastly मेरे, अगर मैं कंपनी की बात करूं वैसे, because coming from a minority background myself, माइनॉरिटीज वेस्ट पिकिंग के अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। तो उनको एक लास्ट जो चीज है ना, हमारे यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमें डेटा की और इस सब की हम बहुत ज्यादा बात करें, लेकिन जो बेसिक्स चीजें हैं, हम कभी कभार उसको भूल जाते हैं, हम आगे की बातों पे ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। हमारे वेस्ट पिकर्स को जो बेसिक लेबर की वेज है ना, वो तक नसीब नहीं है हमारे यहाँ पे। सो हम आगे की जो बात कर रहे हैं वो तो बहुत आगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच मिस एंजल, आपने बहुत ज़्यादा रेलिवेंट पॉइंट्स जो हैं वो हाईलाइट किए हैं, स्पेशली आइडेंटिफाइंग द लूप होल्स एंड देन मेंशनिंग अबाउट द रियल इश्यूज जो कि हमारे इनफॉर्मल वेस्ट सेक्टर जो है वो फेस करता है डे टू डे, एंड वो नॉर्मली हाईलाइट नहीं होते इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे। आई वुड नाउ लाइक टू transition to our next session, which is titled as Aligning Waste Sector Practices with National Climate Commitments. And for that, I would. Amna, just a minute. I think because time almost it's 2:10 p.m. So maybe we can also take a perspective of Shibu. And then for the sake of NDCs, because Arif Saab is also here, just one key recommendation, because I think this is, I have been attending so many meetings, but I think this kind of human angle for the NDCs, I'm sure Arif Saab, you will also agree with me, has never been discussed before. So I don't, I think within NDCs, how acknowledging those who are at the margins and bringing them at the forefront. I think this is one of the key sectors where we can showcase. We have success stories like Hafiz Shafiq Saab, like Angel Imdad. I think this is how we can integrate it. Secondly, in context of data, Angel, you mentioned about the data, the reports that you do for your corporate clients and everything. That data is extremely important. I think this is the key challenge when we are even working on NDCs or anything else, the overall inventory. Those reports are going into silos, and that data integration is missing. Even to showcase and highlight the best practices, that data integration is missing. I'll come back to you, Angel.
after Shibu, because we might have time to do another round for in context of key recommendations. So Amna, maybe we can take his perspective, and then we can do the final round in context of key takeaways. Over to you. So I now invite Mr. Shibu from Gaia Asia Pacific to share regional reflections on waste worker methane mitigation and zero waste transition. Sir, the floor is yours. Uh, Thank you. Thank you for the invite. And yeah, I think without wasting time in just sharing my slides, uh, I think can you someone I'm just sending the request for sharing the slide. IT team, can I please request if you can allow Shibu to share his screen? Yes. We can see your screen. We can see it. All right. Okay. Thank you. Thank you all for the patience. I'm just trying to take you through a kind of a journey over waste management, what is happening across the globe, especially how there is a change in perceiving the waste issue as well as the governance approach to it. So myself, Shibu, and I am working as campaigner on organics and climate for Gaia Asia Pacific, and I'm based in India, in southern part of India. I'm ashamed to say, unfortunately, I can understand Hindi, but my Hindi, like the spoken skills are very scarce. Okay. About Gaia, it's one of the largest network of grassroots level organizations working on waste, climate, and plastics. And we have members in 92 countries, and it's about 1,000 grassroots level organizations in this network. And in Asia alone, we have close to 200 member organizations, including national alliances. And the Gaia network is providing technical as well as grant support for our members to advance the campaign on zero waste and to prevent false solutions like waste to energy. If you look at climate and waste, recently there is a kind of a connection like that. This connection is there, it was there, but only recently that this connection was discussed. And if you look at the waste sector, it is the third largest source of anthropogenic methane. Like if you look at the anthropogenic methane emission sources, it is third largest after, say, agriculture in many of the countries. And it is contributing roughly 20% of all such emissions. So this is a problem as well as this is an opportunity. Why it is an opportunity? Because this is a low-lying fruit when it comes to climate action. And it is also considered as an emergency brake in climate action, where you can actually reduce emissions, or we can actually have a kind of a bigger impact with lower investment. If you look at that, there is a global methane assessment that is by CCAC as well as UNEP. So they have come up with a kind of an assessment. So that assessment shows that the human caused methane emissions can be reduced by up to 45% this decade. And that reductions would avoid nearly 0.3 degrees Celsius of global warming. We know what is happening around global warming. Even 0.1 degrees Celsius fluctuation at the global warming is creating that kind of extreme weather events, especially in Indian Ocean, as well as Bay of Bengal. And when you look at the Asian region, and we are at the receiving end. So even a 0.1 degree is actually very big to us in terms of ecology, in terms of environment, and in terms of economy. And Gaia also did a kind of an assessment of methane. So that report is also available on our website, Methane Matters.
So there we found that waste prevention, source separation of organic discards, and other methods can reduce solid waste methane emissions by as much as 95% by 2030. If we have, if we can encourage our cities, local governments to implement segregated waste collection and segregated management of organics and maximum recycling of materials, that can actually have a kind of an impact of 95% of organic waste methane can be avoided. So that is the calculation. And we need to also read along with the organic waste methane. We have to also look into the food waste scenario. 1/3 of food is being lost, either at the production end, so we call it as food loss, and food waste when it is being processed. So from farm to fork, we are losing around 30%. 1/3 of our food is being lost, and that is also accounting for up to 8 to 10% of greenhouse gas emission. And zero waste, zero emission. So this is the campaign by Gaia, and we are actually pursuing this campaign with our members, and members are actually working on the ground with the local governments and local communities. So zero waste to zero emissions, how reducing waste is a climate game changer. So right now, we consider waste management as a climate action. It is not just waste management. It is not something to clean your litter, or it is not that kind of a what you call scavenging job. So waste management is now elevated into a climate action. So if you look at the global, global level, the greenhouse gas inventories, waste accounts for 3 to 5%. So that is what in their inventory list, which we see. The problem is that they account for energy, they account for agriculture, they account for transportation, fossil fuel, everything. But when it comes to waste, they only look at the waste, and then that is why it is 3 to 5%. But this is only a tip of an iceberg. And if you look at the consumer goods which we consume every day, almost 70% of this greenhouse gas is embedded in every single product we consume. Every single product we consume means that they are also becoming waste in a period of time. So it is there embedded in our every single waste material. The greenhouse gas is embedded, but that is not accounted many of the time. We only look at the fossil fuel, and we are maybe we'll also looking into the landfill gases and or from the sludges from the sludge from the wastewater treatment. And at the same time, we propose waste to energy or incineration as a kind of a solution for waste. But in reality, per unit of electricity, an incinerator produces 2.5 times as much carbon dioxide than a coal-fired plant. So that is the reality. So even waste to energy is actually, they are also producing more carbon, even after considering the energy recovery. So 70% of global greenhouse gas emissions are embedded in the life cycle of all products. So we need to look at every single product from the life cycle angle, and that is the process of zero waste. So zero waste, what we are talking about zero waste is not about managing waste, but it is all about looking at the resource use and management. To be very clear, ethical, efficient, and economical resource use and management. So that is that should be the focus of our governments, rather than just managing the litter. So managing the litter, it is going to be a never-ending game. But if you look it from the perspective of better resource use and management, that gives a kind of a larger opportunity in terms of economic development, social development, and environment development. If you look at the plastics alone, then right now we are discussing much or more about the plastics. We all know that plastics is a fossil fuel. It's from fossil fuel, and it is being processed. So from the extraction and the production, consumption, and finally when it is disposed, it emits a different, like the emissions are there, and so that is not accounted. So that is actually kind of a real issue. If you look at the total petroleum consumption, almost I think 25 to 30% of the petroleum, we are using it for plastic production. And after the plastics we produce, more than 40% of plastics are single-use plastics. So this is the kind of the numbers. And fortunately or unfortunately, these numbers, nowhere you can find it, with whether with the government or with the industry, the numbers are not available. But this is a kind of an estimate
done by the activist on the ground. And when you look at zero waste, so we have this inverted pyramid approach on resource use and management. Instead of just looking at reduce, reuse, recycle, we are looking at it a kind of a very stronger perspective on resource use and management. So refuse and redesign. So that is all about life cycle thinking. So think about the product design, make it more sustainable, whether like decide whether that product has like is sustainable or whether it has to be there in the first place. And then we go for reduction, like waste reduction and reuse. When we talk about reduction, I think that is not much meant for we Asians, because our consumption levels are very low compared to the Europe or US levels. So that is again a kind of a conflict which we have, like when we talk to the community saying, okay, we have to reduce our waste, we have to reduce our consumption. People think, what? Our waste generation, per capita waste generation is something around 400 grams maximum per person. And compare it with US or Europe, that is it is measured in kilograms. And where we are going to again reduce it. So this is all about like ethical resource use practices. That's what we can actually go about. And then preparation for reuse. That is again in Asian perspective, this is happening. So we have organized markets for reuse, and we have more repair centers. Even people encourage reusing, especially dresses or books or even equipments. So that is happening. There is an informal market and there is a formal market for it. But still, it is not enough. And recycling, composting, and anaerobic digestion, that is only focusing on the organic side. And again, being in the temperate, like being in the tropical region, the climate is very conducive for composting, aerobic composting. And this is also a safer place for anaerobic digestion. And or even the new trend is black soldier fly harvesting or even vermicomposting. So there are many technologies are available for managing organics. So recovering organics back into nutrient. And then material and chemical recovery. So that is material recovery facilities needed to like recover the materials for recycling. And then we need to manage the residuals. And incineration or landfill. So those are the things which we see as a kind of an unacceptable thing in zero waste systems. So when you say unacceptable, right now we may be compromising, but in the future we are ensuring that it is not happening. So that has to be there. So we need to say no to those unsustainable, unviable products that become a kind of a burden on communities and on environment. If you look at how zero waste is mitigating climate change, one, it is avoiding the landfill methane. If you start implementing a methane action plan in your city or in your local government, and you implement source segregation as a mandatory thing, and all the organics either at the source or at the community level or at the central level, it is being managed. So we are avoiding organics getting into landfill. So when organic waste accumulated in landfill, and that creates a kind of an anaerobic condition, and in that anaerobic condition, anaerobic digestion happens, and that is why methane is emitted. And when you recycle materials, you are not just recovering energy, you are also recovering or you are mitigating greenhouse gas emissions through like preventing further new production. And most importantly, the compost or the sludge from anaerobic digester or any material you are getting from vermicompost or from BSF, they are soil supplement, and they are actually adding more carbon to soil. Right now, if you look at the Asian soil especially, the carbon content in our soil are actually depleting. It is not much there. Actually, the carbon adds to the water retention capacity of the soil. It improves microorganisms, the colony of microorganisms on the soil. And this topsoil, the 6-inch topsoil across the globe, is actually the life supporting system. They are actually feeding the life on Earth. And it is very important that all these nutrients has to come back to the soil. We cannot just afford to burn them in incinerators and convert that into ash. We need to bring that nutrients back into the soil. And actually, zero waste is improving soil carbon. Thereby, it reduces irrigation expenditure and fertilizer expenditure.
It also acts as a kind of a soil carbon sequestration. And this also eliminates the use of incineration or waste to energy. And right now we see that waste to energy undermines the climate mitigation process. So that is unfortunately that is also happening. So if you do segregation, like when you go for composting, you reduce 78% of methane from organic. And if you do composting and biostabilization, like in your waste management facilities, again, that goes into 90%. And when you do composting, biostabilization, and biologically active cover, like from your existing landfills or existing waste dumps, we call it as kind of what you call the historical dump sites or legacy dump sites. So you need to do a kind of a biological stabilization, and then so you can actually reduce up to 95%. So this is the kind of a roadmap for managing organics in solid waste, especially in municipal solid waste management. And you look at the recycling potential, like what is the potential of recycling in terms of mitigation. We have like around 96%, like it is as high as 96%. You look at paper, you look at plastics, you look at metals, everything can actually go for recycling if it is collected separately. So that is, I think, the person in the video, like in the webinar, Mr. Hafiz, who is a recycler, he was telling about like if things are coming segregated, that actually make things better, and it actually adds to the value. Soil carbon I just mentioned, and avoided emissions from incinerator. Like if you segregated source, you are in Asian conditions, segregation alone solves minimum for 50% of your waste issue, because 50 to 60, 65% of our municipal waste is organic. You segregating at source, that acts alone solves issue. Like if you segregate it, your 50% is solved. Then you only have to deal with the non-biodegradable stuff. And when you just think about the system where our major cities work. They collect all the waste, they transport it 20 kilometers away, and then to a central place, they just dump it, and from there they try to do something. You just look at what they are transporting. Say, for example, 100 tons of waste, for a number, say, I think I'm hearing some numbers here, 16,500 tons per day, or 5,000 tons per day from some cities. Okay. Anyway, let's say 500 tons. 60% is organic. That means 60 tons are organic. And that 60 ton of waste, 80% of that 60 ton of waste is water. Nothing other than water. See? So you are transporting water. That comes around 48 tons. So you are transporting water in organic waste. That is 48 tons to 20 kilometers by burning fossil fuel. If you do source segregation, and if you prefer decentralized source level composting or decentralized cluster level composting, you avoid even the fossil fuel utilization. When I say this, it may be kind of like it may seem like a kind of a what you call a dream, but I am speaking from a city or a state in India where we have implemented. So Kerala is the first state in India who have implemented decentralized solid waste management system, where government encourages households to do composting at source, maximum at source, and whatever surge or the extra is there, it goes to the community level, and there is no centralized facility. So that alone actually reduces the cost of transport. If you look at the municipal budgets, most of the cost comes at the tipping fee and the transportation cost and maintaining the transportation fleet, the logistic mechanism. But you just spend that money with community, or even lesser than that, you just spend with the community that is benefiting the community as well as the environment. And other benefits are like public health. It's obviously, but there is one more recent understanding is that in this climate change scenario, we have observed that in many places, it rains for 3 days, maybe 2 days or 3 days, like torrential rains, and that creates waterlogging. And next 3-4 days, maybe a week,
it is completely sunny. There is no rain. It is completely dry day. And this is very conducive for all the mosquitoes to. Am I getting more time, or I have to? Yes, sir. Apologies, we are running short on time, so I'll request you to Okay, conclude it here, please. okay, okay, all right. So this is all about that public health and more on jobs and better communities. So there are many other facilities, including integration of informal sector, especially through just transition. And so to conclude, zero waste is a game changer for climate change. And if you see zero waste as the climate action and a tool for just transition of informal sector workers to ensure their better economy and like including the job, the dignity of job. So there are many case studies. I'm not going through that. So zero waste looks like this. It is not about just recycling or composting. It is also all about like working at the lower end, EPR, alternate delivery systems, redesigning, clean production. All those things also come back into the system to make it more sustainable. We need to, like you are discussing about the NDCs, you need to look at your NDCs, whether how far that NDC is supporting the process of, or how far it is in alliance with zero waste, and that actually is the starting point for your action plan. I'm just stopping it here. So one, Gaia have floated cities methane pledge. We encourage local governments to sign up for cities methane pledge to implement and develop cities methane action plan that actually creates impact on, it's a climate action as well as it is a zero waste system. And plus, we are also encouraging organizations and governments to utilize the climate finance available under low methane partnership, especially the cities with more than 1 million population. And Gaia is actually facilitating that process with our member organizations to help access those funds to implement zero waste in your countries. I'm just stopping it now. Thank you. Thank you so much for highlighting the importance of climate change and the interlinkage between zero waste. Um, Before we move forward towards key recommendation, I would now pause here to introduce you all to the working group, which we are all talking about since the start of this webinar. So, as part of sustaining this dialogue, we are proposing the formation of waste sector emissions working group. Basically, this working group aims to consolidate the practitioner evidence, support data-driven policy recommendations, facilitate structured engagement with climate institutions, and finally, contributing technical informed inputs to national processes. We welcome expressions of interest from stakeholders who would like to be a part of this initiative. And now we'll be talking more about this in the upcoming days. But for now, we are going to move towards the key recommendations. And for that, I would request Mr. Arif Sahab, sir, if you can just highlight briefly that what practical recommendations can feed into upcoming NDC updates. Thank you very much. I'm glad कि जो आपने dimensions ली हैं besides GCISCs, NDCs और emissions inventory के जो human dimensions आपने इसको touch किया. I'm really thankful that this forum has brought these into the perspective too. जब हम GHG emissions reduction की बात करते हैं या NDC की बात करते हैं commitment की, तो mostly we look through the angles of the GHG emission reduction, and for that the recommendation is data. आप emissions inventory के एंगल से देख लें, आप environmental को benefits के हवाले से देख लें, या आप turning these actions into the climate finance for certain actions, सब की जो pivot है वो data के साथ है. And this is highly unregulated sector. प्राइवेट सेक्टर के रोल को एक्नॉलेज करते हुए आपने कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाने की कोशिश करनी है जो म्यूनिसिपैलिटीज के गिर्द, जो आपका इनफॉर्मल सेक्टर है, उसको इन्वॉल्व करते हुए कि आपके पास फ्लो ऑफ डाटा हो जाए. अभी हम जितनी भी बातें कर रहे हैं मोस्टली वो अजम्पशंस के ऊपर बातें कर रहे हैं. इक्वली गुड ये है कि आल्दो हमारे पास नंबर्स तो हैं कुछ के वेस्ट इसमें वेस्ट से रिडक्शन कितनी हो रही हैं, लेकिन आर दीज नंबर्स एक्यूरेट? Are these numbers robust?
yes, for the perspective of the emissions reductions, for the perspective of the GHGs, NDCs, ठीक है, ये UNFCCC की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। लेकिन जब हम फाइनेंस के साथ लिंक करने की बात करते हैं, जब हम उसको जो एजेंसीज जो रिव्यू करती हैं आपके क्रेडिट्स के लिए इन तमाम चीज़ों को, देन वी नीड टू लुक इनटू द मोर कॉम्प्रिहेंसिव साइट स्पेसिफिक एमिशन रिडक्शंस। इसमें आपको वो जो केस स्टडीज की आपने बात की, आपने वो अच्छे जो जैसे हाफिज साहब तशरीफ लाए, उनकी ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। लेकिन हमारी मजबूरी ये होती है कि जब हम गवर्नमेंट की लेंस से एक डॉक्यूमेंट जनरेट कर रहे होते हैं तो उसमें होलसम पिक्चर को देना होता है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिसिंग रह जाती हैं। फिर ये वेस्ट की अपनी सेग्रीगेशन है बहुत ज़्यादा कि जी आपकी ये ऑर्गेनिक है, आपकी केमिकल है, आपकी जो हॉस्पिटल की वेस्ट है। इन तमाम निटी ग्रिटीज़ को करने के लिए इस वर्किंग ग्रुप के अंदर ऐसी डायमेंशंस ज़रूर रखें कि उसकी एक सब सेक्टर्स के अंदर वो क्लासिफिकेशन हो जाए। This is another learning from the past work I have done with these things. तो मेरी रिकमेंडेशन द फोरमोस्ट इज कि हमें पता तो हो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर बल्कि म्यूनिसिपैलिटी लेवल के ऊपर जो फ्लो ऑफ वेस्ट है वो कहाँ पे है और किस तरीके से है। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। इसके ऊपर हमें कोई मैकेनिज्म क्रिएट करना है, डाटा की गैदरिंग का एक सेंट्रल डैशबोर्ड के ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर। और जो आपने बात की ना नेक्स्ट राउंड ऑफ एनडीसी तो 2030 में आएगा, अभी तो हम बात कर रहे हैं एनडीसी इंप्लीमेंटेशन की। वी हैव कमिटेड 17% रिडक्शंस। अब वो 17% रिडक्शन कैसे होंगी, उसके लिए हमें बेंचमार्किंग करनी होगी कि ये सॉलिड वेस्ट से होंगी, लिक्विड वेस्ट से होंगी, और उन कैटेगरीज की जो मैंने अपनी बात को मुख्तसर करता हूँ उन कैटेगरीज से होंगी जो कि हमने अभी आपके मैंने गोश गुजार की। तो इस वेस्ट वर्किंग ग्रुप को, और मैं कोशिश करूंगा कि मेरे पास जो डेटा इस वक्त मौजूद है जो हमने मिटिगेशन में कमेटी में वेस्ट वर्किंग ग्रुप बनाया था उसके अंदर कौन कौन से लोग मौजूद थे, आई विल बी हैप्पी टू शेयर दैट डेटा विद यू, ताकि उन्हीं लोगों को आप इस वर्किंग ग्रुप के साथ करें और इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग सेट करें। हमें सबसे पहले बीइंग ए इन्वेंट्री के कस्टोडियन के हवाले से मैं ये बात करूंगा, हमें बल्क अप्रोच से लाइफ साइकिल अप्रोच की तरफ जाना है, जिसका भी इस प्रेजेंटेशन के अंदर भी अहाता किया गया है अब्दुल साहब ने। तो वो जो लाइफ साइकिल अप्रोच है उसके अंदर कैसे जा सकते हैं, इन्वेंट्री की जो रोबस्टनेस के लिए ये बहुत जरूरी है। मैं आपको छोटी सी मिसाल दे दूं कि अगर एक आपने प्लास्टिक की बोतल ले ली जो 10 12 15 20 50 100 साल के अंदर जो है वो आई मीन वो पार्ट ऑफ द सॉइल बन जाती है, तो वो अगर मैं बल्क अप्रोच को लूंगा तो मैं उसकी सारी की सारी इमिशन एक साल में डाल दूंगा। लेकिन अगर मैं लाइफ साइकिल अप्रोच के लूंगा तो इट विल बी स्पैनिंग ओवर द 100 years। तो मे भी हमारी इमिशंस जो हैं वो इस हवाले से ज्यादा नजर आ रही हूँ कि जी हमने एक ही साल में उसको ले लिया। इसी तरीके से जितनी भी आपकी वेस्टेज की प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर हर एक की लाइफ की जो है वो अप्रोच जो है वो डिफरेंट है। वो इस हवाले से हमने लेके आना है। लेकिन हमारा लाइफ साइकिल का मॉडल इसलिए काम नहीं करता कि हम उसको बैक एंड का डेटा नहीं दे सकते। एटलीस्ट 5 to 10 years का डाटा हमारे पास होगा तो देंगे। तो मेरी जो स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन वो ये है, एंड बीइंग द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन विच टॉक्स अबाउट साइंस, विच टॉक्स अबाउट डाटा, कि जब तक आपकी बेसलाइन रोबस्ट नहीं होगी वो नहीं कर सकेंगे। और उसके लिए इस जो वर्किंग ग्रुप है उसकी किरदार बड़ा कुलीदी होगा। और मैं अगेन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बिहाफ पे ये इंश्योर करता हूँ कि वी आर आवर फुल सपोर्ट विल बी देयर फॉर द सक्सेस ऑफ दिस एंडेवर। थैंक यू। Thank you so much, Mr. Arif Saab, once again, इतना detailed explanation देने के लिए, and thank you for extending the support as well. We really look forward to working with you. Now, I would like to request Dr. Aisha Khan, if she can just give her key recommendations in 30 seconds. Dr. Aisha, are you still there? Yes. Assalamu alaikum. Yes. Key recommendations in 30 seconds. The most important is organization of informal workers. And as several of the speakers, Rabia said, and Angel also said, it's not an isolated standalone. So even if informal waste pickers को आप organize कर लेंगे, but they are not legally as well as socially as well as in contracts recognized, it will stay
as a isolated small scale pilot. So we really need to think of them as contract workers in our municipal services. Thank you so much, Dr. Aisha. I would request Ms. Rabia Razak to share her key recommendations now. Thank you. I'm going to agree with Arif Saab, life cycle approach होनी चाहिए. I think Shibu said just transitions का framework जो है, and that was what I'm going to also underscore कि बहुत important है. इस दफा NDC 3.0 में just transitions के ऊपर एक आधा 1.5 पेज शामिल हुआ है. So maybe we need to now translate what that really means for different sectors. Priority sectors में of course waste, which like Arif Saab also said कि इसकी contribution in other sectors is so significant कि हमें उसको first reckoning that this is important, identifying कि इसकी contribution exactly है क्या, और जो contributors हैं like Aisha said कि वो जो workers हैं उनको identify करना, map करना, और again taking them to to through just transitions to decent working conditions. I'll stop there. Thank you. I would request Ms. Angel to share her key recommendations now. Sure. Thank you so much. I'll try to keep it short. As सबने mention किया है यहाँ पे, उसी को ही थोड़ा सा आगे डेटा की हमने बात कर ली, इंटीग्रेशन और इनफॉर्मल सेक्टर की बात कर ली. यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसके ऊपर भी फोकस करूंगी. We often focus on mitigation measures only, but we need to focus on adaptive measures as well, because that goes hand in hand. And particularly talking about the Pakistan situation, that is really important that the people understand the importance of it. And talking about जो हमारी ग्राउंड पे लोग काम कर रहे हैं, जहाँ से वेस्ट जनरेट हो रहा है, तो वेस्ट जनरेटर्स हैज टू थिंक अबाउट दिस. एज SCCP हैज आल्सो मेंशन कि इसको अभी मैंडेटरी तो नहीं किया, लेकिन इट इज प्रेफर किया जा रहा है कि वो अपनी यहाँ पे ESG रिपोर्टिंग को मैंडेटरी करें हर कॉर्पोरेट, हर इंडस्ट्रीज. तो उसके ऊपर भी काम करना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर वो इसकी अहमियत को समझेंगे तभी इसमें कोई चेंज आ पाएगा. वरना इनफॉर्मल सेक्टर अभी भी काम कर रहा है, बाकी वेस्ट कलेक्टर्स भी काम कर रहे हैं, सो वहां से कुछ ऐसा हो नहीं पाएगा. एंड लास्टली जो हमारी NOCs मिलती हैं, जैसे हम कलेक्टर्स हैं, हम यहाँ पे रिसाइकलर्स बैठे हुए हैं, उसको थोड़ा सा अब हजार्डियस नॉन हजार्डियस से हट के थोड़ा सा ऊपर से सोचें, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट एवेन्यूज नाउ जिसके ऊपर हम जैसी कंपनीज और बाकी वेस्ट कलेक्टर्स एंड रिसाइकलर्स भी काम कर रहे हैं. तो जस्ट उसकी महदूद वहां तक it's not going to work, whether it's the SEPA or the waste management departments as well. Thank you. Thank you. Thank you. Amna, I'll take over from here. Thank you so much, everyone. I think one of the things that Shibu mentioned, especially jo methane pledge pe, he has also shared the links. Thank you so much, Shibu. And also around the case studies, he has shared the links. I think there are opportunities in context of city methane pledge, and another opportunity he has mentioned जहाँ पे जो financial funding aspect है, I think वहाँ पे regional level पे Gaia can support Pakistan like other countries. जो we are member of Gaia, so SDPI will be providing जो connect करना है different organizations को, if city level पे if we can pilot any city like Sahiwal mein we are working, like Karachi mein with Angel and other SMEs, if we can establish a pilot where we can do this pledge and work around based on different possibilities and different key solutions within Pakistan. Abhi the challenge is we do not have a standard waste policy as well, so we do not recognize, या we do not acknowledge, या we do not ban certain practices. या हम लोग अभी किसी प्रैक्टिस को ना बुरा कहते हैं, ना हम किसी को अच्छा कह रहे हैं, हम एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे, क्योंकि वी डू नॉट हैव अ पॉलिसी. So of course there are industries working on waste burning, incineration as well. पाकिस्तान में officially उसकी ना recognition है फिलहाल, ना उस पे कोई बात हो रही है. So through this platform and working group, we would like to take them on board as well. I have been following comments on LinkedIn, so this is an opportunity, this working group. And Arif Saab, thank you for all the support, and you're always very supportive. जो वर्किंग ग्रुप की आप बात कर रहे हैं, हम चाहेंगे कि आप हमें उनके साथ इंटीग्रेट कर दें, जैसे आपने सजेस्ट किया, सो दैट जो ऑलरेडी उनकी फाइंडिंग्स हैं हम उसी के साथ क्लब कर लें, बजाय इसके कि वी वर्क इन साइलोज. सो बिकॉज वी वांट दिस वर्किंग ग्रुप टू प्रोवाइड you, your department, the kind of relevant support, especially the human angle, and especially in context of any other
best case study as Shivu has shared. And in context of financial support, also exploring the mechanisms of financial support, exploring the funding mechanisms that exist, but jinke bare mein we are not very much aware. So Gaia is a platform that can help us in exploring those mechanisms, and also help us in context of building our capacity on what kind of projects can be pitched to access the funding. We can learn from other countries in the region as well. So thank you so much, Gaia, for the support, and thank you so much, GCISC, for the support. Thank you, ILO, AHK, Akhtar Hamid Khan Foundation, and Angel. I think people like you who are taking this initiative of their own, it's extremely important that your initiatives get the kind of recognition that is missing. Government of Pakistan is working on national circular economy policy. So, and in that policy, one of the key integral part of the policy is going to be how the SMEs model can be scaled up, how the CBOs model can be scaled up, and how the social safeguards can be ensured. I think we would be requiring your support. So thank you, everyone. We will continue the discussions and working group meetings. The schedule will be shared with all of you, so that you can be made part of the working group. Thank you. With this, we formally conclude the seminar. The recording will be available on our socials as well. In case you have any other suggestions, any questions, please feel free to reach out to us via email or over socials. Thank you once again. Thank you very so much, much. Thank you everyone. very much. Thank you, Allah Hafiz. Thank you, Allah Hafiz. And this,